Hello children, welcome to your maths class with Poonam Bagga. Today we are going to start chapter 11 mensuration from class 8th maths. Mensuration is that branch of geometry that deals with the measurement of length, area or volume in 2D and 3D shapes. So here in this chapter we will be finding out some lengths and areas related to 2D shapes, and then we will be finding out the volumes in case of 3D shapes. Also recall here that plane shapes are said to be two-dimensional shapes or simply 2D shapes which have only two measurements, one along the length and the other along the breadth. And we have these most common examples: a rectangle or a square or a circle or a triangle. All these are plane shapes that have two dimensions, length and breadth. Also recall at this stage what are polygons. A closed plane figure made up of some line segments is called a polygon. So the main point here is the presence of line segments, only line segments, and in such a case we can take rectangle, square or even a triangle as a polygon, but not a circle. A circle is not a polygon because it is not made up of line segments. Remember this. And the line segments are called its sides. You can see there are 4 sides in a rectangle, 1, 2, 3, 4. Here we have 3 sides in a triangle, and the intersection of consecutive sides is called a vertex. जब आप दो consecutive sides लगातार आने वाली sides को मिलाते हैं तो ये जो point of intersection है ये कहलाता है vertex of the figure. And in a rectangle you can see there are 4 vertices. In a triangle there are 3 vertices. So these are some of the terms that you know very well from your previous classes. Next we take the concept of perimeter and area. Here we take perimeter. Perimeter is the whole outer boundary of a figure. Take this rectangle. इसकी जो बाहर की boundary है उसे हम कहते हैं perimeter, and it is the total length of the sides of a two-dimensional shape. यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल लेंथ है इसकी 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड्स की जो लेंथ है उसका जो सम लेंगे टोटल लेंथ वो होगी इस शेप की बाउंड्री, और उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर. देन एरिया. द रीजन ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय अ फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. अब इसी रेक्टेंगल के यहाँ बीच में जो रीजन ये कवर हो रहा है रेड कलर से, ये पार्ट इस रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगा, या जो भी ये शेप है क्वेश्चन में जो भी शेप होगी उसके बीच में जो रीजन कवर होगा उसे हम कहेंगे एरिया. Now let us recall the various formulae that we learned in our previous classes related to these different shapes. This is a rectangle, we all know, and what is the formula for its perimeter? We know that the perimeter is the sum of the lengths of all the sides. तो अब ये L है लेंथ, ये साइड भी L हो गई लेंथ, ये ब्रेड्थ B है और ये साइड भी B हो गई. और ऐसे में जब आप चारों साइड्स को एडअप करेंगे L प्लस B प्लस L प्लस B, तो आप देख रहे हैं 2 times L we are getting and 2 times B we are getting. So we can take out 2 as common, and 2 into length plus breadth is the formula to find the perimeter of a rectangle. This you all know very well. So we can erase this part. This is the main formula. Then what is the area of a rectangle? It's clearly length into breadth. This is very well known to all of you, and so I am just revising them. Then next is a square. A square, what is the perimeter? You can see all the 4 sides are equal. ये A units length है, ये भी A units होगा, ये भी A units, ये भी A units. So all the 4 sides are of equal measurement, and so this will be equal to A plus A plus A plus A. तो अब A को आप 4 times लिखें, इससे बेटर है हम इसे लिख लें 4 times A, 4 into A. So here we can write it in general form 4 into side. This is the formula to find the perimeter of a square. This we can remove. This was just for your understanding. Then what is the area of a square? It is given by A into A, that is A square, or in general form we can write side into side, or we can write it as side square. So in whatever way you understand, all mean the same.
अगर आप a की नोटेशन में फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इट विल बी a स्क्वायर और a इंटू a. इन केस ऑफ जनरल केस, side into side, this will be side square. Getting it? Next we have a triangle, and what is its perimeter? It is equal to sum of length of all sides in case of a triangle. In case we have an equilateral triangle, then we can take it as 3 into side, because then the length of each side will be equal, and then we can take it as 3 into side in case of an equilateral triangle only. Otherwise, we take it as sum of length of all sides. Okay? Then area, it is given by half base into height. Base is this side and this is the height of the triangle. You can easily visualize here. जब एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट डॉटेड यहाँ दिख रहा है, इट इज सेड टू बी द हाइट and then it is the base, and this is the formula half base into height. Now in case of a triangle there are 3 altitudes, and so accordingly we have different bases also. If you take the height from this vertex, मान लीजिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये हाइट हो जाएगी और ऐसे में तब ये बेस हो जाएगा. अगर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑपोजिट साइड पे, तब आपकी हाइट ये रेड पार्ट जो दिख रहा है ये हो जाएगी और ऐसे में बेस ये हो जाएगा. तो जिस वर्टेक्स से हम ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट तो हाइट कहलाएगा, और जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो साइड बेस कहलाएगी. तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक ट्रायंगल में एक ही साइड बेस होती है और एक ही हाइट होती है. नो, वी कैन हैव 3 डिफरेंट हाइट्स and 3 different bases, but the area will be same in every case because actually the triangle is the same, and so here we get half base into height. Let me erase this part. This is half base into height. Next we have a parallelogram. What is its formula? You must be knowing that the perimeter, it is equal to sum of length of all its sides. With this we get the perimeter of a parallelogram. And now how to find its area? This area is given by base into corresponding height. What do we mean by corresponding height? For this we will visualize in the figure. In notation form we can write it as base into height, B into H. Now this is the side on which we are getting one perpendicular dropped from its opposite vertex. यहाँ ये जो vertex है, यहाँ से हम एक perpendicular drop कर रहे हैं इसकी opposite side पर. तो ये जो perpendicular line segment है ये तो कहलाती है height, और जिस side पर ये perpendicular drop हो रहा है उसे हम कहते हैं base of the parallelogram. और सिर्फ यही एक combination possible नहीं है, you can have other combinations also possible. अगर हम यहाँ पर इस वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस बार वो बाहर की तरफ आएगा, यू कैन इमेजिन वी विल हैव टू प्रोड्यूस दिस साइड एंड दिस परपेंडिकुलर विल बी लाइंग आउटसाइड. तो ऐसे केस में ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी. इसी तरह से अगर हम इस वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इट विल बी द हाइट एंड दिस विल बी द बेस अकॉर्डिंगली. और ऐसे ही आप इस वर्टेक्स से यहाँ से भी इस साइड को प्रोड्यूस करें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आपका हाइट हो जाएगा और ये साइड, ये वाली साइड आपका बेस हो जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर बेस एंड हाइट, but every time the area will remain the same because the figure is same every time. And so we have actually the formula to find the area of a parallelogram. It is given by base into height. I hope it's clear. And from here we move towards circle. What is the perimeter of a circle? It has a special name and it is called circumference. And we get this circumference as 2 pi r, where pi is equal to 22/7, or we write it as
nearly 3.14. Depending on the radius that we will be given, we will be selecting one value of pi from these two values. Now, what is special about this pi? It is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. अगर कोई भी एक सर्कल लें और उसकी circumference जो उसकी बाउंड्री है और उसके diameter का रेशो लें तो वो हर बार सेम कांस्टेंट वैल्यू आएगी और उसी को हम पाई कहते हैं. It does not matter if we take a small circle or a bigger circle, every time this ratio will be same and it is called pi. और यहाँ पर circumference का formula है 2 pi r, जहाँ पर r क्या है, radius of the circle, and pi is taken as 22/7 or 3.14. In case we see in the questions that the radius is a multiple of 7, तो better है कि हम pi की जो value लें वो 22/7 लें. अगर radius 7 के multiple form में दिया है तब हम 22/7 select करेंगे, otherwise we may select it as 3.14. This will be clear as we will be doing some questions. Next we have the area of a circle. It is given by pi r square. And remember, what is the unit of perimeter and what is the unit of area? Perimeter की unit आपकी अगर मीटर है तो simply मीटर होगी और अगर सेंटीमीटर में हमें दी गई है लेंथ्स तो सिंपली सेंटीमीटर होगी. जो भी यूनिट हमें दी गई है सिंपली वही यूनिट होगी पेरीमीटर के केस में, लेकिन एरिया के केस में इट विल बी स्क्वायर्ड बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग एक्चुअली टू वैल्यूज. सो हियर वी विल हैव आइदर मीटर स्क्वायर एज द यूनिट ऑफ एरिया और वी विल बी हैविंग सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी को आप स्क्वायर मीटर इस तरह भी लिख सकते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह भी लिख सकते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर, दोनों का मतलब सेम है. सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर बोथ मीन द सेम. एंड हियर इन केस ऑफ पेरीमीटर ओनली सेंटीमीटर और ओनली मीटर एज पर द गिवन मेजरमेंट्स in the question. We will be selecting these units. Clear to you? Remember this, there should be no confusion and now no mistake should be done by you in writing the units. Then now we have a semicircle and you all know when we just make a circle half we get a semicircle. Now what will be its perimeter? We have two different cases. एक केस तो ये है जब हमारे पास सिर्फ curved part है और ऐसे केस में जो सर्कमफ्रेंस सर्कल की है उसका हाफ हो जाएगा. सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 2 pi r, इसका हाफ कर दीजिए क्योंकि हम सिंपली हाफ कर रहे हैं. सो 2 and 2 विल बी कैंसल्ड एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस फिगर विल बी pi r. बट व्हाट इन दिस केस? इस केस में आप ये कर्व्ड पार्ट तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ ये डायमीटर भी देख रहे हैं. तो ऐसे केस में आपका सर्कमफ्रेंस या कह लीजिए पेरीमीटर क्या होगा? ये कर्व्ड पार्ट के लिए तो आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हाफ कीजिए, 2 pi r का हाफ करेंगे फॉर दिस कर्व्ड पार्ट एंड फॉर दिस पार्ट इट इज़ 2 times द रेडियस बिकॉज इट इज़ द डायमीटर. सो एड अप हियर 2 r. So cancel this 2 and 2 and actually this is nothing but pi r plus 2 r. This is the total perimeter or circumference of this figure. यहाँ पर सिर्फ pi r, यहाँ पर pi r plus 2 r, क्योंकि यहाँ पर ये closed shape है तो diameter जो है 2 r वो भी add up होगा. Getting it? Now its area. Area will be the same because actually the region that it is being covered by this shape it is the same and so it will be half of the area covered by a circle. तो अगर r सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल हो उसको हम हाफ कर दें तो उसका एरिया क्या होगा? सेमी सर्कल जो बनेगा ये है सर्कल का एरिया, इसको हाफ कर दीजिए. दिस विल बी द एरिया ऑफ रिलेटेड सेमी सर्कल. आई होप all these formulae are very much clear to you. And now with this we start exercise 11.1 from your book. The first question here it is, a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. This is important. स्क्वायर और रेक्टेंगल दो शेप्स हैं और इनके पेरीमीटर सेम है. विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया? दोनों में से किसका एरिया बड़ा है? अब एरिया हम जानते हैं. इन केस ऑफ अ स्क्वायर इट इज़ साइड इनटू साइड, इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बट डू वी नो द ब्रेड्थ इन दिस केस ऑफ रेक्टेंगल? नो.
So first, with the help of this information, same perimeter, we will find the breadth of this rectangle. इस information को use करते हुए पहले हम इस rectangle की breadth find out करेंगे और जैसे ही breadth मिलेगी हम दोनों ही के area को compare कर सकेंगे. So we begin the solution here. First we will find the perimeter of square. And you can always try to do these questions on your own. Pause the video, first try to do it on your own. It is given by 4 into side and this will be equal to 4 into 60 meters equal to 240 meters. This is the perimeter of square. Next we will find the perimeter of rectangle. You know its formula very well. It is given by, yes, come up with the answer, 2 times length plus breadth. And now 2 into length, we know it is 80 meters, but breadth is unknown. So we write it simply B here, or we can write simply here 80, write the unit afterwards. So 80 plus B, where B is the breadth here. And so this is the perimeter of rectangle. Now according to the question, we have been given perimeter of square equal to perimeter of rectangle. तो दोनों को equate कर लेते हैं. Perimeter of square हमें मिला है 240 meters. So we write here 240 meters. And this is equal to perimeter of rectangle, which is 2 into 80 plus B. So here we write 2 into 80 plus B. This is again in meters. Now we can bring this 2 to the LHS in the division after transposing. Here we will be left up with 80 plus B, or we can write 80 plus B, this is equal to 240 by 2, it will be 120, or now we can write B equal to 120 minus 80, this will be equal to 40. This implies that the breadth is equal to 40 meters. Breadth of the rectangle, you can indicate that also, breadth of rectangle. This is equal to 40 meters. Now we have to compare the areas of the two figures. तो पहले हम find out करेंगे area of square. Area of square, it is equal to side into side. This we know very well. And now our side is given as 60 meters. So this will be equal to 60 into 60. This is equal to 3600. And now since we are finding the area, the unit should be very much clear in your mind. It will be meter square. Next we find the area of rectangle. It is given as length into breadth. Now length is here 80 meters and breadth is 40 meters. So it will be 80 into 40, and this you can easily multiply and get the answer as equal to 3200 meters square. Now compare the two areas. Which one has a larger area? Yes, a square, 3600, 3200. So here we have the square has a larger area. I hope the question is very much clear. It was easy based on your previous knowledge from your smaller classes. Next we take question 2. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. देखिए ये एक square plot है और measurement आपको दिया है 25 meters. 25 meters, क्योंकि square plot है तो length और breadth दोनों equal होंगी, चारों sides in fact equal होंगी. So they are measuring 25 meters each. Next, she wants to construct a house in the middle of the plot. आप देख सकते हैं ये बीच में प्लॉट के मिडल में एक हाउस अपना कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हैं मिसेस कौशिक. अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. इस हाउस के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये ग्रीन पार्ट में गार्डन डेवलप होना है. And then find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square.
ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये गार्डन आपको डेवलप करना है एट द रेट ऑफ ₹55 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। समझ में आ जाए तो सब कुछ क्लियर है, समझ ना आए तो थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, और यहाँ आप देख रहे हैं मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होती है यूनिट एरिया की। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि हमें एरिया निकालना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या निकालना है। तो कैसे पहचाने, हमें यहाँ एरिया निकालना है। एक तो यूनिट देख लीजिए, मीटर स्क्वायर, दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया। और कॉमन थिंकिंग से भी आप अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि क्योंकि गार्डन डेवलप करना है जो कि एक 2 डायमेंशनल फिगर है, तो ऐसे में हमें उसका एरिया निकालना होगा, कितना बड़ा गार्डन है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें उसको डेवलप करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो कितना बड़ा गार्डन है ये कैसे पता चलेगा, कितना उसका एरिया है, कितना रीजन वो कवर कर रहा है। तो एक्चुअली हमें यहाँ स्टार्टिंग में एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही हम ये कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस गार्डन को डेवलप करने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे। अब एरिया ऑफ गार्डन कैसे मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पर एक तो ये स्क्वायर प्लॉट है, पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस स्क्वायर में से ये जो शेडेड पार्ट है हाउस का, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस पूरे एरिया में से ये हाउस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो बचेगा एरिया वो किसका एरिया होगा, ऑब्वियसली इट विल बी द एरिया ऑफ द गार्डन। सो फर्स्ट हियर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, then we will find the area of the house, and then we will subtract these two areas to get the area of the garden, and then we will be finding the cost of developing the garden. So we begin the solution here. First, area of square plot, it is given by side into side, and we know the side is given as 25 meters. So 25 into 25, this will be equal to 625 meters square. I hope you have learnt the squares very well till now, and now we have been using it. Then we need to find the area of house. House की आप देख सकते हैं लेंथ है 20 meters और breadth है 15 meters. So area of house will be equal to length into its breadth, and it is given by here 20 meters and into 15 meters. This is equal to 300 meters square. This is the area of the house. And now area of garden, it will be equal to area of square plot minus the area of house. ये दोनों एरियाज सब्ट्रैक्ट करेंगे. You can always connect with the figure. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ हाउस और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 625 minus 300. This will be equal to 325 मीटर स्क्वायर. ये हमें मिल गया गार्डन का एरिया. और अब हमें इस एरिया को डेवलप करने के लिए कॉस्ट निकालना होगा. और क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन. इट इज़ ₹55 per meter square. Or you can write in words also. This slash means per, or you can write in words per meter square. So with this we can now find the total cost of developing the garden. It will be equal to area of garden multiplied by rate of developing the garden. And we know that the area of garden, it has come out equal to 325 meters square, and multiply it by 55. Let us now multiply 325 into 55. 5 5s are 25, 2 carried, here we will have 12, 1 carried, 15 and 1 16. Again here we have 5 2 6 1, add here 7 8 7 1. So it's rupees 17,875. This is the cost for developing the garden. और यूनिट याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर लगा देते हैं. तो अब ये एरिया नहीं है, ये कॉस्ट है, और ऐसे में यहाँ रुपीज़ लगाएंगे हम साथ में. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 3.
The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. आप देखिए ये एक गार्डन है जहाँ पर बीच में रेक्टेंगुलर पार्ट है और दोनों तरफ हमारे पास है semicircular ends. And then find the area and the perimeter of this garden. इस गार्डन का हमें एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है. तो पहले हम एरिया निकालते हैं. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों ही फिगर्स, जो यहाँ पर रेक्टेंगल है बीच में और जो साइड में आपके सेमी सर्कल हैं, इनके डायमेंशंस क्लियरली समझने होंगे. डायमेंशंस का मतलब लेंथ ब्रेड्थ जो भी डायमेंशन है वो हमें क्लियरली फाइंड आउट करना होगा. और दिया है कि यहाँ से लेकर एंड तक ये टोटल लेंथ है 20 मीटर्स. तो पहले हम फोकस करते हैं इस सेमी सर्कुलर पार्ट पर. आप देखिए ये सेमी सर्कल है और ये यहाँ पर इसका आप सर्कल का सेंटर इमेजिन कर सकते हैं. यहाँ सेंटर होगा और ये सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ हो रहा है. तो सेंटर से पास होने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है ये कहलाता है डायमीटर. तो अब ये जो लेंथ दी गई है 7 मीटर्स, दिस इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पार्ट. और डायमीटर मिलते ही उसका हाफ करने से हमें सेमी सर्कल का रेडियस मिल जाएगा. एंड सो द रेडियस विल बी 7/2 मीटर्स, हाफ ऑफ 7. और इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखें अगर, तो इट विल बी 3.5 मीटर्स. तो अब क्योंकि ये रेडियस है तो ये सब तरफ से बराबर होगा. सो दिस वन विल बी ऑल्सो इक्वल टू 3.5 मीटर्स. इसी तरह से ये डायमीटर है, यहाँ पर सेंटर आप इमेजिन कर सकते हैं. तो रेडियस आपका हो गया 3.5 मीटर्स और 7/2 मीटर्स. ये भी रेडियस हो गया, जो लेंथ हो जाएगी 3.5 मीटर्स. और ऐसे में जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट का सेंटर पार्ट है, ये ऐसे में जो ये बीच में रेक्टेंगुलर पार्ट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल 20 में से आप यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5 माइनस करेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ मिल जाएगी. और जब लेंथ मिल गई, ब्रेड्थ आप देख ही सकते हैं 7 मीटर्स है रेक्टेंगुलर पार्ट की ब्रेड्थ, तो रेक्टेंगल का एरिया मिल ही जाएगा. और सेमी सर्कल के केस में हमने यहाँ पर रेडियस पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, सेमी सर्कल का एरिया भी हम निकाल सकते हैं. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे. हियर वी विल टेक फर्स्ट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट. You can always relate with the figure. It is equal to 7 meters. ये diameter है जो कि है 7 meters इस semicircular part का. Then what will be the radius? It will be 7/2 meters, or in points we write it as 3.5 meters. With this we find the length of the rectangular part. It will be equal to 20 minus, take 3.5 from here, take 3.5 meters from here. तो आपको 20 में से 3.5 प्लस 3.5 ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे हमें लेंथ मिल जाए इस रेक्टेंगुलर पार्ट की. यहाँ से लेकर इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी मान ले तो ये लेंथ ए बी मिल जाए हमें रेक्टेंगुलर पार्ट की. सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस, हाउ टू ऐड 3.5. You can simply add it, it's easy. You will find it as 7. And so 7.0 is nothing but 7. This will be equal to 13 meters. This is the length of the rectangular part. तो अब हमारे पास इसकी लेंथ आ गई 13 मीटर्स. सिंपल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ. इसकी ब्रेड्थ हमें पता है 7 मीटर्स है. रेक्टेंगल पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं. इसी तरह से हम सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे यूजिंग इट्स फॉर्मूला. वी टेक द नेक्स्ट पेज. एरिया ऑफ द गार्डन, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ rectangular part plus area of two semicircular ends. We will be adding these two areas to find the area of the garden. अब rectangular part का जो area होगा वो क्या होगा? Length into breadth, and the length we have found it to be 13 meters. And the breadth is given to be 7 meters. You can visualize from the figure. So 13 into 7, this is the area of rectangular part, plus here 2 times the area of semicircle. You can multiply by 2, and what is the area of a semicircle? We discussed it just now. It will be half of that of a circle. So pi r square by 2, where we can denote this radius of semicircular part by letter small r. Here we indicate this radius by small r, and it is equal to 7/2
meters as we discussed it just now. Now this will be equal to 91 meter square. 13 into 7 is 91, plus here we can cancel this 2 by 2. And now what value should we choose for pi? We know the radius is 7 by 2 where we are getting 7. तो क्योंकि 7 का मल्टीपल मिल रहा है हमें रेडियस में, तो हम लेंगे पाई की वैल्यू 22 by 7 and then multiply this by r, which is again 7 by 2 into 7 by 2. आप चाहें तो 3.5 meters भी ले सकते हैं, but then it will be little bit difficult for you. So here we will now be using this and cancel 7 by 7, 2, then 11 times 22, and we are having 91 plus 77 by 2. This will be equal to 91 plus 77 by 2, 2 3s are 6, then we have 17, 8 times 16 and then 0.5. Add the two numbers, you will get it as 91.0, 38.5. डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाकर ऐड करते हैं, जिस नंबर में डेसिमल नहीं है लास्ट में लगाकर 0 लगा दीजिए. दिस विल नाउ बी इक्वल टू 0.5 हियर, 9 हियर and then 12 here. So it will be equal to 129.5 meters square. This is now the area of the garden. Next we need to find the perimeter of this garden. Here just have a look. We have to find also the perimeter of this garden. तो perimeter कैसे मिलेगा? Here we can take, just make some space to find the perimeter. Perimeter of garden, it will now be equal to, just have a look, हम पहले तो ये 13 मीटर्स लेंगे रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ, ये भी 13 मीटर्स हो गई रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ, इसको और इसको ऐड करेंगे. क्या ये डायमीटर भी ऐड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनसाइड में है, आउटर बाउंड्री पर नहीं है ये डायमीटर, और ये आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये डायमीटर है. Actually there is no diameter in the ground, but we are imagining the shape that the diameter of this semicircular part is somewhere here. पर अब जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो ये जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं यही तो हुई बाउंड्री इस गार्डन की, और ऐसे में ये पार्ट ऊपर ये है 13 मीटर्स, ये भी है 13 मीटर्स, और अब हमें ये सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए यहाँ पर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी होगी, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट एंड राइट बोथ एंड्स पर. तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं perimeter of garden, this will be equal to 13 meters plus 13 meters plus 2 times circumference of semicircular ends. Getting it? Now again making some space, we can write here, this is 13 plus 13 equal to 26 meters. This is very well clear. And now this will be equal to 2 times circumference of semicircular end. Circumference of semicircle क्या होगा? It will be half of that of a circle. Circle की होती है 2 pi r और इसकी हो गई by 2, और simply we can write the formula pi r. So 2 into pi r. And now this will be again equal to 26 plus 2 here. In place of pi we can write 22 by 7, and in place of r we have 7 by 2. Cancel this 7 and then cancel this 2. You have 26 plus 22. Add the two numbers, it will be 48 meters. This is the perimeter of the garden. I hope the question is clear. Now we take question 4. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeters and the corresponding height is 10 centimeters. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? तो यहाँ बात हो रही है एक parallelogram shape की टाइल की. Let us once draw this. आप समझिए यहाँ पर एक parallelogram shape की टाइल है इस तरह से. Let me also make some space to write down. Yes. और इसमें आपको दिया है बेस तो है 24 सेंटीमीटर, ये बेस साइड तो है 24 सेंटीमीटर, और करस्पॉन्डिंग हाइट आपको दी गई है ये हाइट 10 सेंटीमीटर्स. देख लीजिए, ठीक है. अब इस तरह की टाइल्स, एक फ्लोर है जिसका एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर. आप इमेजिन कर सकते हैं एक फ्लोर इस तरह से
जिसमें इस तरह के साइज़ की टाइल्स लगानी हैं और हमसे पूछा है कि ऐसी कितनी टाइल्स लगाई जाएं कि ये पूरा फ्लोर एरिया कवर हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? अब ऐसे केस में आप सोचेंगे कि ये टाइल तो ऐसी थोड़ी सी टिल्टेड है और ये फ्लोर हम मान रहे हैं कि रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो यहाँ मेंशन किया गया है कि इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स को फिल अप करने के लिए आप टाइल को स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन भी यहाँ क्वेश्चन में दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी टाइल्स लगानी है, तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ दिस वन सिंगल टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर तो हमें दिया गया है, इट इज़ 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर तो हमें पता है और एरिया ऑफ वन सिंगल टाइल हम निकाल सकते हैं, इट इज़ बेस इनटू हाइट। और जब हम एरिया ऑफ फ्लोर विच इज़ 1080 इसमें डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन सिंगल टाइल विच विल बी बेस इनटू हाइट, तब हमें जो नंबर मिलेगा that is the number of tiles required to fill up this complete area। बात समझ में आ रही है कि यहाँ हम पूरे एरिया में डिवाइड करेंगे इस एक सिंगल टाइल का एरिया और तब हमें एक्चुअल काउंटिंग मिलेगी कि कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेंगी। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेट मी इरेज दिस पार्ट and then we will be able to solve. Yes, we begin the solution first by writing area of floor. It is given in the question. This is equal to 1080 meter square. Then area of one parallelogram tile. Parallelogram shaped tile. This is given by base into its height, corresponding height. Now the base is given as 24 centimeter and the height is given as 10 centimeter. So this is given in centimeter and this is given in meters. So we need to make the unit same. तो कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और जब हम बात कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की, इसका मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 centimeter. So actually we will be multiplying this number 1080 by 10,000. 4 zeros लेंगे, 2 and 2. So 1, 2, 3, 4. This will be this much centimeter square. This is nearly 1 crore 8 lakh centimeter square. This is the area of floor and area of one parallelogram shaped tile. This is 24 into 10. This is equal to 240 centimeter square. तो अब दोनों areas हमें centimeter square में मिल गए हैं. Now we can easily find the number of tiles required. It is given by area of floor upon area of one tile. This is equal to 108, 1, 2, 3, 4, 5 upon here we have 240. Cancel this 0. Then you can easily divide by 12. 12 2s are, 12 9s are, and then we have 1, 2, 3, 4. Again you can divide by 2. This will go 45 times and then we have 3 zeros. So actually this is equal to 45,000 tiles. These tiles are required, this much number of tiles are required to cover up the full area. Okay, now next we have question number 5. An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. These are 3 shapes. Actually these are the shapes of food pieces scattered on the floor. Floor पर गिरे हुए कुछ खाने के दाने हैं यहाँ पर और इनके चारों तरफ for which food piece would the ant have to take a longer round? In food pieces के around ये ant which is looking very cute here, it will be moving around through these food pieces. इनकी बाउंड्री के अलॉन्ग ये एंट मूव करेगी, तो कौन से फूड पीस के लिए सबसे लंबा राउंड लेना होगा, लॉन्गर राउंड? दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर वी विल बी फाइंडिंग द बाउंड्री ऑफ दीज फूड पीसेस. फॉर दिस वी विल बी फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ दीज फूड पीसेस और दीज गिवन शेप्स. ओके, वी टेक द फर्स्ट वन. Here on this page, radius of the semicircular part, you can see this is the diameter given and so the radius will be half of it, 2.8 upon 2. This will be equal to 1.4 centimeter. This is the radius
of this semicircular part. और अब हमें distance covered by the ant around the food piece, this will be equal to the perimeter of the given figure. और ऐसे में ये perimeter कैसे मिलेगा? ये पार्ट तो आपका हो गया पाई इंटू आर, सेमी सर्कल है तो पाई इंटू आर, और ये हो गया आपका डायमीटर 2 इंटू आर, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू पाई आर प्लस 2 आर. पाई हमें क्या लेना चाहिए? रेडियस हमारा 1.4 है जो कि 7 का मल्टीपल है, तो पाई हम लेंगे 22/7 इंटू 1.4 प्लस हियर 2 इंटू आर, और we can take it as 2.8 straight away. This is 2.8 given here. So we can take it straight away 2.8. Now cancel this. This will be 0.2. 22 into 0.2, it will be 4.4 plus 2.8. Add it. 4 and 8, it will be 12. 1 carried. 4, 5, 6, 7. 7.2 centimeters. This is the distance covered by the ant to take around for this food piece. Next we take part B. अगेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट. आप देखिए ये सेमी सर्कुलर पार्ट है यहाँ पर, इसका रेडियस फिर से 2.8 सेंटीमीटर्स का हाफ हो जाएगा. इट विल बी अगेन 1.4 सेंटीमीटर्स, एंड अगेन वी विल हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. अब पेरीमीटर कैसे मिलेगा? 1.5 अगर हम माने कि एंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो 1.5, फिर इसके बाद ये 2.8, फिर ये 1.5, तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, ये डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर्स है, तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी ऑल्सो 2.8 सेंटीमीटर्स. दिस इज़ 1.5, सो दिस वन विल ऑल्सो बी 1.5 सेंटीमीटर्स. और अब हमें ये सेमी सर्कुलर पार्ट का कैसे मिलेगा पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस? इट विल बी गिवन बाय पाई आर. अगेन नाउ 1.5 प्लस 1.5, इट विल बी 3.0 प्लस 2.8 प्लस हियर 22/7 into r is given by 1.4. This will now be equal to 8 and 5.8 plus here cancel this again 0.2, this will be 4.4, and add up 8 and 4 12, 1 carried, it will be 10.2 centimeters. So to take a round for this food piece, the ant will have to move about 10.2 centimeters. Then the third one, radius again we will have to take for this semicircular part. Again it will be 2.8 upon 2 equal to 1.4 centimeters, and again to find the distance covered by the ant to go around this food piece, we will have to find the perimeter of this figure. अगर आप देखें कि ant यहाँ से स्टार्ट कर रही है मान लीजिए, तो पहले ये सेमी सर्कुलर पार्ट, इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस हो जाएगा आपका पाई आर, देन प्लस वी हैव दिस वन एज 2 एंड दिस वन एज 2. यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ से ये 2, सो दिस वन विल बी 2 प्लस 2. दिस वन विल बी अगेन 22/7 into 1.4 plus here we have 2 plus 2 4. Cancel this 0.2, 4.4 plus 4. So this is equal to, अब कैसे ऐड करेंगे? इसमें ध्यान रखिएगा, पॉइंट का ध्यान रखना है. Since there is no decimal, take it as 4.0. So it will be now 8.4 centimeters, and every time take the radius denoted by small r. So now just take a look at all these perimeters. This is 8.4, this is 10.2, again mark it as r, and then this one is 7.2. तो बताइए कौन से फूड पीस के लिए सबसे लंबा राउंड लेना पड़ेगा एंट को? It is this figure B, जहाँ पर 10.2 centimeters is the maximum perimeter, and so here we can conclude the ant will have to take a longer round for the food piece B, because the perimeter of figure B is the greatest of all. So with this we complete exercise 11.1. I hope you enjoyed, you understood all these questions. These questions were based on the previous knowledge from your smaller classes. In our next class we will take up some new topics. Bye for now.